Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Sani. I hope you all are good. Today we will discuss how to use hear and listen. Okay, so there is little bit confusion where to use hear and where to use listen. Okay, so today I will clear all your doubts. So stay with me till the end. Okay, so let's learn words hear and listen. Both have same meaning. Okay, means sounds that come to our ear. Okay, but their uses are different. Okay. So let's learn how to use words hear and listen. Okay. So hear means no effort. Okay. Means sounds that come to our ear naturally. ऐसे साउंड जो नेचुरली हमारे ईयर तक आते हैं मीन्स हम फोकस नहीं करते, हम ट्राई नहीं करते उनको सुनने की, वो नेचुरली हमें सुनाई देते हैं. ओके मीन्स जब हम साउंड को नेचुरली सुनते हैं तो वहां पे हम हियर वर्ड का यूज करते हैं. ओके सो एग्जाम्पल ऑफ हियर, कैन यू हियर मी? ओके सो मीन्स हम किसी पर्सन की साउंड को सुन सकते हैं. ओके नेचुरली सुन सकते हैं. सो हियर वी विल यूज हियर. सो डिड यू हियर द थंडर लास्ट नाइट? ओके मीन्स थंडर के साउंड को भी हम नेचुरली सुन सकते हैं. ओके सो हियर वी विल यूज हियर. आई डिडंट हियर व्हाट यू सेड, सॉरी. ओके सो हियर पर्सन की वॉइस को सुन सकते हैं. हियर वी विल यूज हियर. ओके सो कुड यू स्पीक लाउडर प्लीज? आई कुडंट हियर एनीथिंग. ओके सो पर्सन की वॉइस को हम नेचुरली सुन सकते हैं. सो हियर वी विल यूज हियर. ओके सो कैन यू हियर द वर्ड सिंगिंग इन द गार्डन? ओके सो मीन्स वर्ड्स की सिंगिंग को भी आप नेचुरली सुन सकते हो. सो हियर वी विल यूज हियर. ओके सो वी हर्ड अ टेरिबल नॉइज व्हेन द कार क्रैशेस इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस. ओके सो मीन्स कार क्रैश की साउंड को भी आप नेचुरली सुन सकते हैं. सो हियर वी विल यूज हियर. सो हर्ड इज द सेकेंड वर्ब ऑफ हियर. ओके नेक्स्ट लिसन. लिसन मीन्स एफर्ट. जब आप सुनने के लिए एफर्ट का यूज करते हैं. ठीक है, जब आप किसी चीज को सुनने के लिए जहाँ पे एफर्ट लगता है तो वहां पे हम लिसन का यूज करते हैं. ओके सो व्हेन यू पे अटेंशन टू लिसन टू साउंड. ओके जब हम अटेंशन देते हैं किसी साउंड को सुनने के लिए. ओके यूज टू विथ लिसन इफ देयर इज यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके अगर किसी ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है ओके सो हम प्रेपोजिशन टू का यूज करेंगे लिसन के साथ. ओके सो लेट्स टेक सम एग्जांपल. आर यू लिसनिंग टू द रेडियो लास्ट नाइट? ओके सो हियर हमने रेडियो को ऑन किया. ओके मीन्स यहाँ पे क्या है, एफर्ट लगा, उसके बाद हम उसको सुन पाए. ओके सो हियर वी विल यूज लिसन. सो माय सिस्टर लव्स लिसनिंग टू म्यूजिक. ओके सो हियर वी विल यूज लिसनिंग. ओके आई ट्राई टू लिसन बट कुडंट हियर एनीथिंग. ओके आई ट्राई टू लिसन मीन्स यहाँ पे ट्राई किया, फोकस किया सुनने के लिए. सो हियर वी विल यूज लिसन बट आई कुडंट हियर एनीथिंग. ठीक है, तो यहाँ पे हियर का यूज हुआ. एवरीबडी लिसन केयरफुली टू द ओल्ड मैन स्टोरी. ओके सो ओल्ड मैन की स्टोरी को सुनने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, एफर्ट हुआ. ओके सो हियर वी विल यूज लिसन. ओके यू विल गेट इन ट्रबल इफ यू डजंट लिसन योर टीचर. ओके so here we will use listen. Okay so here is focus on the teacher. Okay so we will use here listen. Okay so difference between hear and listen is hear means the sounds into your ears whether you want it or not. means कुछ sound अगर आप सुनना चाहो भी या नहीं भी सुनना चाहो फिर भी वो आपके ईयर में नेचुरली सुनाई देते हैं. so there we will use hear. Okay listen when you pay attention and try to listen to sound. ठीक है, जब आप अटेंशन पे करते हैं और ट्राई करते हैं साउंड को सुनने की. सो देयर वी विल यूज लिसन. ओके लेट्स कंपेयर इट. यू कैन हियर समबडी टॉकिंग. ओके मीन्स समबडी किसी की वॉइस को हम नेचुरली सुन सकते हैं. ओके हियर वी विल यूज हियर. ओके मीन्स यहाँ पे एफर्ट नहीं है. सो हियर वी विल यूज हियर. यू कैन हियर समबडी टॉकिंग बट यू नीड टू लिसन टू दैम to understand what they are saying. बट यहाँ पे क्या है, फोकस है अंडरस्टैंड करने का कि वो क्या बात कर रहे हैं. ओके सो हियर वी विल यूज लिसन. ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. थैंक यू. सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.